Just share the screen. तो अच्छा, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के हवाले से कि इन द लास्ट क्लास। ओके, अभी आवाज आ रही है मिस मदीहा आपको? कैन यू हियर मी नाउ? अच्छा जी, तो वी आर रिकॉर्डिंग द लास्ट क्लास एबिलिटीज के हवाले से वो थी। ओके ग्रेट। कि एबिलिटी स्पेसिफिकली कैन, कुड एंड विल, कि हम किस तरह जो है ना, हाउ वी टॉक अबाउट जनरल एबिलिटीज एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज। तो उसमें हमने कैन के हवाले से सीखा था कि कौन सा काम किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, सही। So we also talked about, actually you talked about, you shared your skills and abilities and your talents. And then we also did some vocabulary and phrases. And then we also used can as a general ability, कि can को किस तरह हम general ability के लिए एक generalized form में हम अपनी abilities के बारे में बताने के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद we also learned कि how we use is am are plus able to talk about specific ability। तो किसी डिटेल्ड में जब हम अपनी abilities के बारे में बताते हैं, सलाहियत के बारे में, we use is am and are plus able to। And then can जो था ना, वो प्रेजेंट के लिए हमने यूज किया। Then we also used could. Could is also used for general ability, but it is used to tell about the past। कि जब हम माजी का जिक्र करते हैं, माजी की एबिलिटीज के पहले मैं कौन सा काम कर सकता था, या फलाना बंदा कौन सा काम कर सकता था या थी, सही। And it is used for general abilities। And then we also used how was and were plus ability is used to talk about specific ability in the past। जिस तरह is am are यूज किया जाता है स्पेसिफिक एबिलिटी में, बट वो प्रेजेंट में यूज किया जाता है। द सेम वे वी यूज was and were plus able to। लेकिन ये हम किस लिए यूज करते हैं? टू टॉक अबाउट द पास्ट, माजी के बारे में बताने के लिए कि पहले कौन कौन सी एबिलिटीज आती थी, या कौन कौन सी सलाहियत थी आपने, या काम करना आता था आपको। देन we did some activities, and in the end we also learned about will be able to। तो जो क्या बताता है, हमें फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर में हमारे कौन कौन से इम्कानात हैं काम करने के, कि कौन सी एबिलिटीज हमारे पास होंगी, या कौन सी काम करने की सलाहियत होगी हमारे पास। ओके। And yeah, that was quite much it। We so did some compare and contrast activities as well। Okay। And now coming towards the class of today, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आज की क्लास किस हवाले से है, वो है जी आप लोग की प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के हवाले से। कि किस तरह कोई काम किया जाता है, सॉरी, किस तरह आप काम को जारी रखते हैं, या जब हम जारी रखते हैं कोई काम प्रेजेंट में, सो हम उसको किस तरह बताते हैं। So my first question is, and a simpler one from you is कि what are you doing now? Because you see कि हमारी क्लास ही इसी हवाले से है कि अभी हम क्या काम कर, सॉरी, मतलब कि अभी क्या काम कर रहे हैं या क्या काम करते रहते हैं आप कंटिन्यूअस बेसिस में, जो कि जारी रहता है। So that is why my question from you is कि what are you doing now? And you have to be a bit detailed, सही। जरा आप थोड़ा तफसील से बताएं कि because everyone right now in the here right now is taking the class तो आप सब ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप या खुद से कोई इमेजिन सिनेरियो बता सकते हैं। यू कैन इमेजिन अ सिनेरियो एंड देन यू कैन टेल इट इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सो यस, वुड लाइक टू आंसर फर्स्ट? जी। ओके मिस आयशा, आई एम गोइंग विद यू फर्स्ट। जी। Assalamu alaikum, sir. Hope you're doing well. वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm doing well। I hope you're doing great as well। Yes, sir. Alhamdulillah. Sir, here I want to explain. First of all, right now situation, I am taking class. And I am opening my laptop, and I am holding a notebook, and I am also holding a pen, and I am writing whatever you are saying, and I am trying my best to improve my English, and I am trying my best to participate in this class, and
I am taking tea right now, and I am preparing dinner, and I am teaching my kids. I am Okay. cleaning my house. Okay, that's great. You are doing a lot of activities at once. So yes, that's great, and that was quite much detailed. No, sir, Yeah. I'm not doing all the things, but I'm just No, but explaining. no, that's good. That's good because I needed those details. तो सही है. Thank you very Yeah. much, Miss Aisha जी. बड़ी अच्छी तफसील से आपने बहुत कुछ बताया हमें. Okay, now second, Miss Nazia Ahmed जी. It's been a long while since you were with us. जी, Miss Nazia. Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम Uh, अस्सलाम. जी, Sir, carry on. first of all, I say that I I'm doing my work, daily routine work. That just like that I make a cook food. I I am making a cook food, and then I also Yes. and I am saying, and it is it is the time of the studying of my daughters. Or and I am also sorry, this is No, it's it's okay. It's okay. Yes. 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 Thank you very much for telling me, giving us the details. Okay. Now, next person would be yes, Ms. Rosaila. Sir, am I audible now? Yeah. Yeah. Quite much. Okay. Nothing special. I'm just spending my leisure time wandering here and there. If you are talking about short term, in long term, I am spending my holidays with my family. And as holiday work was given from school, I am spending time with it, solving it. Mm-hmm. Okay. So I think there is still a bit of internet issue at your end, Ms. Rosaila. Okay. However, if you could kindly write 2 to 3 sentences, but in the chat box, okay? Because if the truth be told, I didn't quite much get you. Okay, sir. So, however, thank you very much for your struggle. Okay, yes, Mr. Osman. Yes, sir. I'm writing notes Okay, great. right now. Mhm. I'm seeing you. Yeah. I'm Okay. watching you. I'm watching you in my laptop. Okay, okay, great. So, I'm typing a question in Alpha chat box, and okay, that's great. moreover, I am drinking water right now. I am preparing. I am preparing. I am planning. I am planning my today's lesson. That's great. अच्छा सर, that- near future को भी हम continuous में ले लेंगे. I'm preparing plan for my next week. Yeah, I'm preparing yes, plan for my second day. Yeah, yes, yes. 14th class. Exactly, exactly. And you said like this, okay, I will be doing this or I shall be doing this. जी, बस more specifically इसमें will be use होता है तकरीबन कि आगे मैं ये काम करूंगा या tomorrow I will be driving a car कि कल मैं गाड़ी चला रहा हूँगा. जी. अच्छा, वो future में ठीक है सर. Yes, but we will be doing this I think in the 15th class or 14th or 15th class. I have no idea, but क्योंकि आज का क्या है हमारा we are talking about present today. So Yeah. tomorrow we will be talking about either the past or the future or maybe both. Yeah. Okay, So, I'm okay, thank you. controlling my. Okay, I'm जी, जी, carry controlling on, my carry on. laptop screen. Okay, great. I'm Okay, also thank you. I'm जी. also typing in my WordPress, Microsoft Word. I'm making notes with my interaction with you. Okay, that's great. That's great. Okay, thank you very much, Mr. Usman. Okay, going ahead for Mr. Mustafa. Ji. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Assalamu alaikum. How are you, sir?
Alhamdulillah, I'm doing great. How are you, Assalam. Mustafa? I hope you're doing great. Ji, And sir, I am watching television now this time, yeah. and I am seeing to my nephew and niece to their playing. Okay, okay. And what else are you doing? Eh, Now I am taking a tea 5 minutes ago. Mhm. Okay. Yes, I am reading a paper before tea, having tea. Okay, okay. Okay, challenge Okay, sir. Mustafa. Thank you. Yes, thank you very much. Yes, sir. Yes. Okay, Okay. now going towards Miss Madiha. Ji, Miss Madiha. Did you give me the answer or not? Welcome, sir. Walaikum salam. Ji, Miss Madiha, can you tell us what are you currently doing right now? Yes, sir. First of all, I am taking the class and listening you. I am hold a pen and notebook. I am handle my child. I am watching my mobile phone. I serve something to my husband friend. Okay. And So enough, sir. yes, yes, carry on, carry on. Actually, I'm also reading the messages in the chat box. That's why. Ji. Okay, that's enough, Miss Madiha. Enough, Okay, I sir. think that's enough. आपको मैं आवाज नहीं आ रही? आ रही है आपकी आवाज जी। ये सर जो मैंने बताया है बस इतना ही कर रही हूँ. जी सही सही ओके चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच okay let's continue towards the lecture now let me just give me a minute to read those sentences in the chat box. So let's continue towards the structure of present continuous या also called present progressive कि जब हम पॉजिटिव में बता रहे होते हैं so what sort of structure we use किस किस्म का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं so by now all of you know कि हम क्या करते हैं सबसे पहले और sentences begin with subject के साथ हमारे sentences शुरू होते हैं then we use helping or या auxiliary verb if there is any and then we use the form of verb according to the auxiliary or helping verb. तो हम क्या करते हैं हमेशा या फिर then the rest of the sentence. पहले भी मैंने कहा है time and again और मैं फिर से बताऊंगा कि the most important thing while making sentences is helping या auxiliary verb if there is any helping या auxiliary verb and main form of verb. मैं आपको पहले chat box में भी ये लिख देता हूँ. Yes. जब आपको इन दो चीजों का पता हो कि आपके पास helping verb कौन सा होगा and what sort of form of verb you will be using according to that helping verb. सही तो फिर आपको सारे sentences आएंगे सही for example if we are using has and have so we will be using third form of verb या past participle form of verb. So right now we are using is mr सही so with them we will be using ing form of verb. तो ये helping verb जो है उसके मुताबिक ही हम क्या करते हैं form of verb लगाते हैं और सिर्फ दो ही sentences होते हैं in which we do not use any helping verb in positive sentences. वो कौन से हैं? Present continuous and present simple and past simple. तो ये दो sentences होते हैं कि जिसमें positive में we do not use any we do not use any helping verb और हम क्या करते हैं form of verb के मुताबिक ही हमें पता चलता है कि कौन से जुमले की sentence की बात हो रही है. So now coming towards the present continuous सब्जेक्ट आई के साथ जो आएगा वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा एम होगा वी हैव लर्नड इट अगेन वी हैव लर्नड इट बिफोर एंड आर विल बी यूज्ड विद यू वी एंड दे एंड देन इज यूज्ड विद ही शी इट और एनी नाउन सिंगुलर नाउन अगर प्लूरल नाउन है या दो नाउन्स हैं अहमद एंड जमील इस तरह के लगे हैं तो उसके साथ भी हम आर यूज करेंगे सही बट इफ यू हैव सिंगुलर नाउन तो उसके साथ हम इज यूज करेंगे एंड देन
ing form of word. For example, I am eating, you are eating, we are eating, they are eating, he is eating, she is eating, it is eating, Alex is eating. See, so this is the positive form of, so this is the affirmative or positive form of present continuous. Okay, हमें नीचे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी गई है कि I am singing songs now. ये now को अंडरलाइन इसलिए किया गया है to show you about the present, कि क्या है प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है. However, हमें उससे भी पता चल जाता है using helping verb से भी is am are, क्योंकि is am are shows you about present the time. It shows you the time कि किस में बात की जा रही है प्रेजेंट के बारे में. I am singing songs now, मैं अभी गाना गा रहा हूँ. They are singing songs, वो गाना गा रहे हैं. She is singing songs, वो गाना गा रही है. सही. Now using the negative one is quite simple. अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि while you are using negative or interrogative, आपकी form of verb जो है ना, ये main verb जो लिखा है, this will remain the same. ing form ही लगेगी, उसके अलावा कोई दूसरी form नहीं लगेगी. सही. For example, I am not singing, you are not singing, yeah, you aren't singing. He is not singing, yeah, he isn't singing. She isn't singing. It isn't singing. See, I guess we are also given examples here later on. Okay, so going towards you now, I hope you got the gist of it. कि किस तरह जो है ना, how you're supposed to make sentences, and the structure is also ahead of, in front of you. So kindly, Mr. Usman, could you kindly make a few sentences of present continuous and change those sentences into negative? Yes, sir, I type in my chat box. Sir, you are looking energetic while teaching now. Okay. Yes, that's a great sentence. However, I don't know why I'm feeling that I'm not that energetic today. Yes, sir. Yeah, I'm okay, not. yes. So, mhm. I'm Yeah, not. kindly, I'm not looking energetic while teaching now. While studying now. okay, okay, Am I good, good. Am I looking Ji- energetic while studying now? Great, great. So you did the work ahead of you. That's great. Thank you very much, Mr. Usman. So yes, sir, I want to I want you to do the same. Yes, Mr. Mustafa. Kindly make a sentence and change this that sentence into negative. Yes, sir. Ji. I, we are all waiting for our result. Okay, good. We are all waiting for result. Great. And how are we supposed to change? Yes. And how will we change that into negative? We are not waiting of our result. Okay, great. And Yes. are we waiting for result now? Okay, great, good. Thank you. Yes, Miss Aisha. They are playing games. They are not playing games. Are they playing games? Okay, great, good. Thank you. Yes, Miss Nabiha. जी, Miss Nabiha. Yes, sir. जी. I am writing a essay. Okay, great. I am not writing essay. Yes, I am writing an essay. Okay. Ji. But yes, okay, thank you very much. And finally, Miss Nadia. Ji. Yes, sir. Kindly make a sentence in affirmative or positive and change that into negative. Yes, Miss Nadia. We are playing in the park. Sir, are you addressing me? Yeah, yeah. Okay. We are playing in the park. We are not playing in the park. Are we playing in the park? Great, great, great. So yes, sorry, I muted you in the middle. G, Miss Nadia, you want to say something? I will give another example. Okay.
Correct. So most of you know the structure of question as well. However, after we are done with the question, I would like you to have a bit of conversation as well in present continuous. अच्छा, so what about the question? Question भी easy है. हम क्या करते हैं? We always start the question with helping verb या auxiliary verb, and then we use the subject, and then subject according to helping verb, and then the form of verb. जिस तरह मैंने बताया था ना कि इसमें जो है ना verb form आपकी change नहीं होगी, ing form ही रहेगी. सही? So am I singing now? We had the example कि I am singing songs now. I am not singing songs now. So the example in question, the same example in question will change into am I singing songs now? क्या मैं अभी भी गाना गा रहा हूँ? Are you singing songs now? Is she singing songs now? या is he singing songs now? सही? So okay, yes, starting with Miss Madiha and Miss Aisha, I want you to both to have a bit of conversation regarding any topic. आप एक दूसरे के हाल अहवाल भी अभी पूछ सकती हैं कि आप ये फॉर एग्जांपल कॉन्वर्सेशन इस तरह जानी चाहिए कि आप क्या कर रही हैं, अच्छा घर में सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं घर में सब, एंड व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, सही है, कहाँ नहीं कर रही. सही. So you have to make a conversation go like this, both Miss Madiha and Miss Aisha. जी. Okay, sir. So how are you, Madiha? I am fine, and you? I am alhamdulillah fine. So what are you doing What now? I am taking the class. So what you think? Are you gaining something from this class? Sorry. It is beneficial for you? Are you getting something from Yes, this yes. class? Do you? Okay. Yes. So tell me about your And what family. you? Family. I have 4 family members. My 2 child, me Okay. and my husband. Okay. So are you from Islamabad? Yes, I live in Islamabad. Sir, how we will use present continuous here? कहाँ पर किस तरह? Okay, now I get it. What are you watching? What are you watching? I watching my mobile phone. Okay. And what are you playing? Are you playing snooker? Sorry. What are you No. playing? You're not playing now. I playing. I like playing racket shooter. Okay, you like badminton. Yeah. And are you sitting on a chair or on a bed? On a sofa. Okay. And while taking class, are you using drawing room or a lounge? TV lounge. On TV lounge. Okay. So, are you talking to with your friends or with your family members? Sorry, समझ नहीं आई क्या पूछ रही? I'm asking, are you talking with your friends or with your family members? आप अपने मतलब फैमिली मैं मेंबर्स से अपने बात करना दोस्त पसंद करती हो या फ्रेंड्स के साथ? बोथ दोनों के साथ. Okay, you are talking with your friends and family both. So, I are have you no going to a boyfriend. party? No, no, I don't like. Okay. Okay. Would you like to ask me something? Yes, Miss Nadia, you can also ask Miss Aisha some questions. Uh,
Yes, yes, What's Miss about your Nadia. family? Uh, I have 4 kids, and my husband is doing job in a private company, and I am taking class. I am learning English, and I am playing cricket too, and I am talking to my friends now, and I am planning to go a party, and I am also planning to go on northern areas during the vacation. And these days I am renovating my house, and I am suffering a lot because of hot weather, and there are a lot of noise at my place, and they are so messy around me right now. So, sir, it is okay. Yes, that's more than enough. Yeah. Yes, yes. Okay, and then let's drive the conversation now towards 2 more participants. Yes, Miss Nazia Amer and Usman Hakim. Ji. Hello. Miss Nazia Amir, am I troubling you? Sorry to say, sir. I Yes. what are you saying? Are you listening me? Yes, sir. Yes, sir. Ji, Okay. Mr. Usman. What, are you watching laptop? Are you No, watching you? I am watching my mobile. I'm not watching the laptop. Okay. Are you operating your mobile with your thumbs? Yes, I am operating my mobile with my thumb. Okay. Yes, and try to make I- conversation as natural as possible कि सवालात हों जवाबात ये दोनों साइड से होने चाहिए सही जिस तरह नाजिया आमिर जिस तरह मिस्टर उस्मान आपसे सवाल पूछें तो आप भी उनसे सवाल पूछ के पूछ सकती हैं इसी वक्त पे कि वो आपको जवाब दें जी this is not good. Yes. What are you doing now, Mr. Usman? I'm operating my laptop and answering your questions. And what are you doing after this? After this class. Yes, I will revise my class after this class. Okay. And sir, is it it's necessary to questioning in a present tense? You Yes, can it's use correct. both देखें conversation जाहिर सी बात है जब हम बात करते हैं so we simply do not use one type of sentence but you can use other types of sentences as well but try using present continuous as much as possible सही कि अभी आप क्या कर रहे हैं और Okay. क्या चल रहा है आपके अंदर जी So what now Mr. Usman, and what are you doing nowadays? Nowadays, I'm touring of my company, and I'm also managing my colony society. Also, I'm also preparing my daily lessons of this marathon English class, and I'm also participating my time. I'm also participating the valuable khidmat for my parents as well. Oh, and do you have a family? Do you have a family? Yes, I am spending my time mostly with my father and mother,
it's my daily routine with my wife. It's my I'm going for a walk daily. Okay. And Is your brother playing right now or no, doing something else? he is not playing right now because he is very ill. He is very Okay. Your children are disturbing you in your class or not? Can you hear me? Yes, Ms. Nazia, can you hear us? Chalo, ठीक है, that's enough, I guess, Yes. because we have other slides to go as well. Thank Okay, thank you very much, Mr. Usman and Ms. Nazia. Okay, as for the next participants, Mr. Waqas and Mr. Mustafa. अच्छा Mr. Waqas, sorry to drag you in the middle. हम किस चीज़ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा पहले से मैं बता दूं कि हम किस चीज़ के हवाले से पढ़ रहे हैं आज. तो मिस्टर वकास, आज की जो क्लास है हमारी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं. Whatever that is happening right now, जो अभी जो हम कर रहे हैं काम, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं. सही. तो उसमें हम जब इज एम आर कहाँ अच्छा हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है कि इज एम आर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में एंड देन वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. और हमने जी ऑलरेडी हमने ये सीखा है कि एम हम किसके साथ लगाते हैं, आई के साथ. आर हम किसके साथ, यू भी दे के साथ लगाते हैं. और इज ही शी इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं. सही. और आर हम प्लूरल नाउन के साथ. अच्छा, फॉर एग्जांपल आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स नाउ. सही. आई एम सिंगिंग, दे आर ईटिंग, यू आर ड्राइविंग, शी इज ड्राइविंग. तो ये सेंटेंसेस हो गए अफर्मेटिव के या पॉजिटिव के. जब हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, सो वी विल बी यूजिंग नॉट. हम नॉट यूज करेंगे. सही है. इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आई एम नॉट सिंगिंग, यू आर नॉट सिंगिंग या यू आर नॉट सिंगिंग, ही इज नॉट सिंगिंग या ही इजंट सिंगिंग. सही. इस तरह. अच्छा, फिर इसमें जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं क्वेश्चन सारे. सो एम इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. एम आई सिंगिंग, आर यू सिंगिंग, इज शी सिंगिंग, इज ही सिंगिंग. इस तरह. समझ आ गई आपको स्ट्रक्चर की? जी सर. जी सर. Okay, so अच्छा एक्टिविटी ये है Mr. Waqas and Mr. Mustafa कि now both of you have to do a conversation in present continuous. बाकी sentences भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें कोशिश ये करें कि present continuous को ज्यादा यूज करें. Okay, sir. Yeah. Hello, Assalamu alaikum, Mr. Waqas. जी सर. जी वालेकुम अस्सलाम. How are you? I'm fine, alhamdulillah. How are you doing? I'm doing well. Very good. And not what are you doing now? I'm attending the class of English speaking. Very good. Very good. Where are you? Oh, sorry. Where are you today? Right now I'm in Faisalabad. I'm residing in Faisalabad. Okay. And what are your hobbies? What are your hobbies and habits? What you like? I am doing my job right now, and as well as I'm trying to learn English these days by attending this session online class. Are you have a family? Yes, I have a family, alhamdulillah. How many kids yours? I have 2 kids. My younger son is 8 years old, and elder son is more than Well, 10 years old. are your parents there live with you? No, my parents are not living with me. They are living their native village.
Okay. What is your job? Which type job? Which type your job? I'm serving as a government official in Federal Board of Revenue, that is a prominent tax department of Pakistan. Oh, well department. Money is big, big cash. Yeah, yeah. Okay. We are responsible for And tax collecting all over Pakistan. we are hungry. Okay. And what are And you doing? yes, yes, What are yes, you doing? yes, I am good. Okay. I am watching TV and playing my kid and nephew and niece playing cricket. I'm saying to them. Okay. 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 That was more than enough. Thank you very much, both Mr. Mustafa and Mr. Abbas. Let's continue towards other activities in the teaching. Okay, so these are some of the verbs. यहाँ पर हमारे पास कुछ verbs इस तरह बताए गए हैं कि how you are supposed to change them into continuous form, सही, or how you are supposed to change those verbs into ing form. And there are also some verbs that cannot be changed. So the first portion is by directly adding ing to the verb. हमारे पास कुछ verb इस तरह होते हैं कि जिनके साथ ing लगाने से ही फौरन those verbs change into present continuous, ing form of verb. Speak, speaking, go, going, teaching, washing, learning, eating, drinking, sleeping, ये सारे हो गए. However, we also have such form of verbs जिनके आखिर में e आता है. So वो verbs जिनके आखिर में e आए, how will you change those verbs into ing? By removing the e and putting in ing. By adding ing to the verbs ending with e. अब कम है, कम के आखिर में e लिखा हुआ है, but you will have to remove e and then you will have to put ing. Come, coming हो जाएगा, write, writing, drive will change into driving, ride, riding, smiling, wiping, typing, driving. सही? Okay, then we also have another form of verb जिसमें y आता है. वो भी simple है कि आखिर में आप ing लगा लेंगे. So cry, crying, fly, flying, study, studying, lay, laying, supplying, applying, playing, trying. And then we also have some words जिसमें क्या आता है कि आखिर में t आता है. अच्छा, by adding ing to the verbs with short vowels, sorry, वो verbs जो कि short vowels हों जिनमें. सही, we have also already learned about vowels. सही है कि वॉवल्स किस किस्म के होते हैं, वॉवल्स होते क्या हैं. तो वो वॉवल्स या वॉवल साउंड यू कैन से कि जो शॉर्ट हो, जो कि बहुत ही छोटे से हो, जो कि जल्दी खत्म हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल कट, पुट, हिट, स्विम. अब ये वर्ड्स आप जिस तरह पढ़ते हैं बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं. इनमें वॉवल्स जो है ना वो छोटे हैं. रन, गेट, सेट, स्टेप. तो ये क्या करेंगे, whenever you are changing these sort of verbs into ing form, इनमें जो आखिरी लेटर होगा वो आप डबल करके लिखेंगे. कट, कटिंग हो जाएगा, डबल टी आई एन जी. पुट, पुटिंग, पी यू टी की जगह पी यू डबल टी आई एन जी, पुटिंग. हिटिंग, स्विमिंग, रनिंग, गेटिंग, सेटिंग एंड स्टेपिंग. सही. Okay, so these are some of the examples, quick example or and activities already हम कर चुके हैं. So yes, we'll be skipping this. Okay, go ahead. Actually. चलिए, ये मैं अभी आप लोग को इसी के बारे में बता रहा था कि these are some of the verbs जो क्या करेंगे आप, whenever you are using these verbs, you simply okay cannot use these verbs with ing form. आप इन verbs को जो है ना कभी भी ing form में यूज नहीं कर सकते. सही. Now I myself have no idea कि what is the reason behind it, but you simply cannot. हालांकि आप बनाना चाहे तो verb form इसकी बनती है, needing, understanding, wanting, but in a sentence you simply cannot use these. सही. So need क्या है, you will always say she needs it. उसको इस चीज की जरूरत है. आप इस तरह नहीं कह सकते she is needing it. सही, कि उसको जरूरत हो रही है. हालांकि उर्दू में कहते हैं कि जरूरत हो रही है उसे, but in English you simply cannot use these. Same goes for understand. I understand the lesson. Okay, या जब आप कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, in English you say I am trying to understand. You don't say I am understanding the lesson. So you are trying to understand. So for example, want. Okay, another example is want.
he wants some money. You cannot say he is wanting some money. He wants some money. Okay, love, she loves you so much. Yes, she loves her dog. Yes, she loves her pet. She is loving her pet. You cannot say she is loving her pet. Say, remembering, okay, sorry, remember, we remember you. आप ये नहीं कह सकते कि we are remembering you. But I think when it comes to remember, you can use these in the past. If you were remembering you yesterday, कि कल हम तुम्हें याद कर रहे थे, तो it might be possible कि इसमें से कुछ words में past में आप use कर सकते हो, but not in the present. Okay, now hate goes the same way. जिस तरह हम love है उसको भी use कर सकते हैं. We cannot also use hate while using ing. I hate her. I am hating her. आप ये नहीं कह सकते कि I am hating her. सही. जब आपको कोई बंदा बुरा लगता है, what do you say in English कि I hate her या I hate him. आप इस तरह कहते हैं ना. You don't say कि I am hating him या I am hating her. Okay, so okay, now see, जिस तरह मैंने remember के बारे में कहा कि you can use this in the past but not in present. C को आप क्या कर सकते हैं कि you don't use it in the present. Okay, yes, Miss Aisha, you have a question. Okay, जी Miss Aisha. Sir, here we use all in second form or third form, like understand, understood, want, wanted, Exactly. and Exactly. loved, Yes. hated, saw, trusted, Yeah. believed. Exactly. You're right. So you can use all of these in either first form or second form or even in third form, but not in their continuous form, not in ing form or using ing form. Okay. Yes, sir. Yes. Anything else, Miss Aisha? No, sir. Okay, Jimmy, thank you very much. Okay, one more thing I was saying कि C आ गया है. Now जब हम future के बारे में सीखेंगे, future continuous, उसका structure हम सीखेंगे. So we can use this C in future continuous. और उधर पर जब हम use करते हैं, so then we can use ing form of. For example, यहाँ पर लिखा है ना कि I see you now. अभी मैं तुम्हें देखता हूँ. सही. You cannot say I am seeing you now. Or I think in some context you can say. But while using in future, you say, I will be seeing you tomorrow. कि कल मैं तुम्हें देखूंगा या कल मैं तुमसे मिलूंगा. I'll be seeing you tomorrow मतलब कि कल मैं तुमसे मिलूंगा. So in that sense, you can use seeing. Now, same goes for trust and belief. You trust me. You cannot say कि you are trusting me. I am trusting you. Even it highly depends upon the context. In that sense, कि for example, आप किसी बंदे को काम पकड़वा दें. सही है कि आपने काम करना है. If you give any sort of responsibility to a person, so in that context you can say कि I'm trusting you with this work. सही कि मैं ये काम को लेके तुम पे भरोसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So these are highly, actually, I think all of these are contextual words. Mr. Osman, have you kindly explain this question to me? I'm meeting you. जी Mr. Osman. यस सर, इन वर्ब्स के बारे में जो है वो एक जगह पर लिखा हुआ है कि इन्फिनिट फॉर्म्स जो है ना जनरली वो रिक्वायर कर रहे होते हैं. तो जैसे कि हेट है तो उसके अंदर हेट इन्फिनिट भी हो सकती है या इन्फिनिट भी हो सकती है, कि ये भी रीजन है. It could be the reason, but want जी, but infinite जो है ना, infinitive form वो तो हर एक वर्ड का होता है. जो भी वर्ड हो हर एक वर्ड की infinitive form होती है. To hate, to see, to trust, to become, so yeah, to drive. ये सारी infinite Yes, form, sir. infinitive forms है. जी. Yes. Okay. Thank you very much. Yes, as I was saying कि trust हो गया है जब आप किसी काम को और किसी बंदे को responsibility देते हैं. So you say to them कि I am trusting you with this work. So इस context में अगर आप देखा जाए, so you can use this word trusting. Now same goes, okay, belief. I believe you. Yeah, we believe in Allah. सही. So हम ये नहीं कहते कि I am believing you. Yeah, we are believing in Allah. We simply believe. मतलब generally आप इसको use करते हैं. सही. So these are some of the verbs with which you simply cannot use ing form. Now going back to previous activities. Okay, so there are actually three sorts or three functions of present continuous. Present continuous के तीन functions होते हैं जिसके मुताबिक आप ये sentences use कर सकते हैं. The first function is that present continuous or present progressive shows you something happening right now. अगर आप किसी को अपने हालात के बारे में बता रहे हैं कि अभी क्या काम हो रहा है आपके इर्द गिर्द, so in that case you use present continuous.
Another function is you use present continuous to show longer action in progress now temporarily. कि मतलब कि कोई भी काम जो कि बहुत ही ज्यादा वक्त ले रहा हो लेकिन वो हल्की हल्की कंटिन्यू हो, सही। तो फॉर एग्जांपल यू कैन से, अच्छा पहले की एग्जांपल ये कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग क्लास राइट नाउ, सही, कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, इस लम्हे में हम क्लास ले रहे हैं, या इस एक घंटे में हम क्लास ले रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द सेकंड फंक्शन टू शो लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस, कि जब कोई काम होता है, कोई लंबा काम होता है, तवील काम, एंड दैट हैपेंस इन प्रोग्रेस, आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा होता है, चल रहा होता है। So we also use present continuous for that, or present progressive in that matter. So for example, they are building a house. They are building a factory. वो एक factory बना रहे हैं. A factory एक दिन में, एक घंटे में तो नहीं बनती है. It takes months or years to build a factory. That is why in that case you can also use, क्योंकि क्या होता है, हर आए दिन उस पे काम होता है, या वीक में, हफ्ते में 4 बार 5 बार 5 दिन काम होता है, सही। So in that sense you can also use present continuous. यस मिस राजी आमिर, हमारे जो है ना, अच्छा जहाँ पर भी कंटिन्यूअस की बात आ जाए, स्पेसिफिकली इन 3 टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, सो कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए आप जो है ना ये हम यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं। सो आईएनजी जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की या पास्ट कंटिन्यूअस की, यू विल बी यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, सही। सो आज की एक्टिविटी में भी हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। In tomorrow's work, man, we'll be talking about the past and the future present continuous. Future continuous. So उसमें भी हम ing form of verb use करेंगे। Okay, so a third function of present continuous is it is used to express a planned action in near future. कि आगे जो करीब के दिनों में जो आप काम करने वाले हो, जो कि किया नहीं हो लेकिन मुस्तकबिल में करीब के दिनों में जो काम आप करने वाले हो, उसके बारे में भी आप क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताते हैं, सही। आई एम गोइंग टू पेशावर टुमारो, कल मैं पेशावर जा रहा हूँ, सही। सो कल मैं पेशावर, यू कैन यूज future continuous as well, कि I will be going to Peshawar, but you can also use present continuous to show the actions of the future, कि कल मैं पेशावर जा रहा हूँ। हम अक्सर पूछते हैं ना, if you meet a friend or if you meet your siblings or anyone, कि कल आप क्या कर रहे हैं, तो they will answer you in the same continuous form, कि कल मैं पेशावर जा रहा हूँ, या कल मैं क्लास ले रहा हूँ, सही है, कल मैं बाजार जा रहा हूँ, तो क्या है, रहा हूँ। So they are also using present continuous. You can use this present continuous form to show these 3 functions. Okay, हम हर एक फंक्शन के बारे में थोड़ा और जो है ना एग्जांपल्स वगैरह भी अब देखेंगे। Okay, so the first function to show something is happening now. So I am watching a movie now. Yeah, you can use this, ये जो आप लोग को राइट कॉर्नर पे जो 4-5 phrases दिए गए हैं, now, right now, at the moment. Sorry, these are 3 phrases. At the moment, ये at the moment जो है ना ये एक ही phrase है, सही। At the moment, right now या now. So you can use these phrases, या खुद से और भी phrases आप लगा सकते हैं to show कि you are doing something right now at this very moment, in this very minute, सही। So I am watching a movie at the now, या a movie at this hour, कि इस घंटे या इस वक्त मैं फिल्म देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। और ये क्या बता रहा है कि to show something that is happening now, कि अभी जो हो रहा है काम, वो इसके बारे में आप बता रहे हैं। He is doing his homework right now, कि अभी वो अपना होमवर्क कर रहा है। I am talking with my pen pal at the moment. Pen pal मतलब कि दोस्त वगैरह, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ। Many people are suffering from cancer at this time, कि इस वक्त पे बहुत सारे लोग क्या है कि कैंसर के मरीज है या कैंसर से ऊपर गुजर रहे हैं। They are playing in the ground now, कि अभी वो लोग क्या है, ग्राउंड में खेल रहे हैं। Okay, so as we have a bit of activity here, what do you have to do? और ये पिछली जो पहला फंक्शन है उसी के हवाले से है कि the moment of now, you have to tell this activity in the moment of now. Okay, tell about what is happening around you in your home right now. You can tell about your own home. आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि whatever is there in the picture, आप इस पिक्चर को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। The choice is yours. जी, so yes, who would like to go first in this activity? Okay, Mr. Mustafa, I'm choosing you now this time. Ji. Ashish Saisha, starting with you.
sir, I will describe my situation right now, and I am taking class. My kids are watching TV. We are eating popcorn. We are eating caramel popcorn while watching TV. I am preparing dinner for my family, and my maid is doing home chores, and my kids are fighting. My kids are fighting and playing together. My eldest son is singing a song. My husband is doing his exercise, and we are reading books together. We are playing together. We are playing Ludo together. Okay, great, that's great. Yes, okay, thank you very much, Ms. Aisha. Thank you, Now sir. going towards my pleasure. Okay, Ms. Madiha, could you tell us what's happening around you right now, or you can also describe whatever there is in the picture? Yes, sir. The girl and boy are playing in the room upstairs, and mother cooked delicious food for lunch, and father raising her. Yes. Hmm? बस सिर्फ उतना ही रहा है। Okay. बस Okay, sorry, thank you very much. Yes, okay, Mr. Waqas, Ji. Yes, sir. Sir, I'm taking class, and Yes. along with taking class, I'm preparing some notes for my office, which I have to present in tomorrow's meeting. And apart from this, in addition, I am listening Azan here. So that is the call for the prayer. And after this, I will have my dinner. Okay, great. In short, I'm doing a multitasking right now. I'm preparing my Great. work and taking your class. Okay, that's good. That's great. Thank you very much, Waqas. Yes. Ms. Nazia, could you tell us what's happening around you right now, so we can describe the picture to you? Yes, sir. Sir, I explain this picture. I want to explain there. Sir, I'm listening I'm listening you and your lecture, and this picture is describing that two children are playing together, and they are staying on upstairs, and and downstairs the mother is giving the food. No. Okay, great. And Yes. the brother and the sorry to say, and her son is watching TV, and they also play they also he is also claiming the food on food, and on the side of the day of the TV, the lamp is Yes, can you? so what about saying then? Ji? The lamp is standing now, and that's Yes, thank you very much. And Ms. Nazi and Ms. Madia, both for you, you can, you have to, it will be better if you speak as boldly as possible. इसकी फिक्र आप ना करें कि आप गलत बोल रही हैं या जिस तरह बोल रही हैं जी सही okay thank you very much yes जी मुस्तफा जी sir. okay so could you tell us your current situation or you know if you want to describe it Yes. you can do that as well जी Children are crying, and cat is sitting near my house, and the dog eating the mail
near my house. The dog is, you can say And the dog is eating the baby. जी. okay, and my nephew Bilal playing cricket, and my younger nephew Muhammad Ahmad already crying, Okay. Okay. and I'm also watching TV and reading newspaper, Okay. Okay. That's good. and my niece coming to me, Pariya. Okay. Okay. That's great. Good. Thank you very much, Mr. Mustafa. Thank you, sir. Okay. Yes, Junaid Muhtaj, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, but yes, how are you doing, Mr. Junaid? Alhamdulillah, sir. And what about you, sir? Alhamdulillah, I'm doing great as well. So yes, Junaid, today the class is regarding present continuous. Present continuous Yes, हमारी sir. से क्लास हमारी जी, तो जिसमें हम ये सीखते हैं कि अभी जो है ना हम क्या कर रहे हैं, जो अभी का काम कर रहे होते हैं हम उसके हवाले से बता रहे होते हैं, सही? So जी जी yes, जी. So I'll just tell you a bit about the class structure जो हमने सीखा. जी. जी अच्छा, सर. तो इसमें क्या है कि मैं जल्दी से आपको बता दूं ताकि आप भी अगली एक्टिविटीज में फिर हिस्सा ले सकें. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस तरह हर एक टेंस में होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव. तो इसका पॉजिटिव आप किस तरह जी सर. करेंगे? इसका स्ट्रक्चर सिंपल है कि आपने इस एम या आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, सही? तो जी एम सर. जो है ना वो आई के साथ लगेगा, आर यू वी दे के साथ, और इस जो है ना ही शी इट के साथ, या एक ही नाम हो सिंगुलर में हो तो उसके साथ रहेगा. फॉर एग्जांपल, आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स, मैं गाना गा रहा हूँ. यू आर सिंगिंग Yes. सॉन्ग्स, तुम गाना गा रहे हो. शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, वो Yes. गाना गा रही है. जी. जब आप Yes, नेगेटिव sir. बनाएंगे तो उसमें सिंपली बाकी सेंटेंस यही रहेगा, इस एम आर के बाद नॉट लगा लेंगे और वर्ब की फॉर्म भी चेंज नहीं होगी. आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, ही इज नॉट सिंगिंग Yes, sir. सॉन्ग्स. तो इस तरह हो जाएगी जी. और जी क्वेश्चन सर. सेंटेंस की बात आती है तो ये इस तरह होगा कि आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे इज एम आर, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन यू पुट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो एम आई सिंगिंग Yes, sir. सॉन्ग्स, क्या मैं गाना गा रहा हूँ? आर यू सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या तुम गाना गा रहे हो? इज ही सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या वो गाना गा रहा है? सो स्ट्रक्चर इसका सिंपल ये है, Yes. सही? जी. जी सर. तो इसके हमने फिर फर्दर 3 फंक्शन सीखे, जिसमें से पहले फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं कि पहला फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस का, कि टू शो समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ, कि कोई भी काम जो इस वक्त हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी काम जो इस वक्त कर रहे जी हैं, सर. सही? सो अभी आई वांट यू टू डू दिस एक्टिविटी हियर, कि जिसमें आपने क्या बताना है कि ये जो पिक्चर दी गई है आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है अभी आप वो बता सकते हैं यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जी. Okay, sir. I am taking class. My brother he called for home. My two friend now he start eating. Yes. My two friend he going now for marketing. ऐसे सही है सर? जी कहें, दोबारा करते हैं. I am taking my class now. जी, good, good. My brother now he called for home. Okay, my brother is calling to home. Yes, yes. जी. My friends he start eating now. Good. My two friend going now for marketing, for shopping. Okay, आप इस तरह कह सकते हैं कि my two friends are going for shopping. Okay, sir. जी. क्योंकि हम रूम में 6 आदमी है, तो अभी सही मेरा है, भाई सही। घर में फोन किया, काम से फ्री सही हो है, गया, और मेरा 2 आदमी जो है ना वो थोड़ा सा खाना खा के ड्यूटी पे जा रहे हैं. सही है, सही है. Okay, so I think In- that's जी. Yes, sir. Okay, चलिए ठीक है. Thank you very much. That's enough for now. Thank you. Okay, yes, let's continue with the activities. Okay, so in the next one you will have to describe the picture. इस वाले में क्या करना है कि you can see कि there are a lot of peoples and there are a lot of animals as well. तो हर एक इंसान या हर एक जानवर क्या कर रहा है, आप 2 से 3 लोगों के बारे में इसमें बता सकते हैं.
सही, या कोई सी जानवर जो है या कोई भी कुछ भी चीज जो आपको एक्शन दिखाई दे रहा है, यू कैन टेल अबाउट दैट. यस, स्टार्टिंग विद मिस्टर उस्मान. ठीक है मिस्टर उस्मान. Okay, Miss Asha, let's just kindly take the lead. Sir, here a boy is taking sun bath, and another boy is swimming in the swimming pool, and a chef is making food, and a girl is playing with football. A cat is sitting beside the pool, and a duck is walking around the pool, and a boy is standing on a pencil, Yeah. Yes, and Usmani, a carry on. dog is, yeah, what are you saying? No, it's okay, yeah, carry on. Okay, a dog is drinking some juice. A girl is climbing on the stair, and I think she is pushing a trolley, and another girl is putting sun cream on her body, and another little boy holding a what is this, sir? Snow White? Yes, okay, the boy wearing the Bonnie cat, right? The red topi wala jo hai, this one. Okay, and Yes, fishes it is. are swimming in the pool. Good. Yeah, thank you very much. Yes. Now for the next one, G. Mr. Okas, kindly describe this picture in present continuous. Sir, I think man is lying over the sun bath plank, and G. children are playing around. A person is swimming. A chef is taking a bath in water. A fish is sailing. Yes. A child G. is trying to jump into the water. Yeah. The little kid has made a snow bear. Yes, a snowman. You call this snowman. No? Write it. Snowman. Let me write it down in the chat box, please. Snowman. Okay. Another child is drowning through parachute, landing through parachute. Landing parachute, yeah. And the woman is doing yoga on the floor mat. And a sea lion is playing with the little girl. Yeah. That's okay. Thank you very much. Yes, Miss Madhya, kindly describe this picture to us. Yes, sir. Yeah. So this picture is of a swimming pool. Yes. A gentleman is sitting outside the pool. A child is making a snowman. Men are swimming in the pool. Children are playing around the pool. A lady is going to slide in the pool. A child trying to jump in the pool. Child is trying to jump. G. Yes, okay. A girl G. exercise. Yes, if you want to describe it more, you can do it.
Okay, Jenny, thank you. Yes, Mr. Junaid, kindly describe this picture. Yes, sir. Sir, there is many children in the picture. The one boy is sleeping. The dog is some drink the juice. The one man is the swimming in the swimming pool, sir. Yes, there's one, yes, one was swimming. Yeah, carry on. In the one girls in some the oil for body the massage sim sir. Yes, she is ये जो applying एक लड़की बैठे है sunscreen. ना Gee, you can say the girl is applying sunscreen on her body. Sunscreen. Yes. Let me write it down for you, G. in the world the one girls in the going for some the leather sir ये इसको leather बोल सकते हैं सर किसको? ये जो स्विमिंग पूल के ऊपर सीढ़ी है ना जी. Yes, you can call it इसको leather. leather बोल सकते हैं Yes, leather for the time being you can use this word. Yeah, because I myself have no idea कि इसको बोलते क्या हैं specifically इसका नाम क्या है. Sir, for the time being leather is used करना इसके लिए. the one kids some take the fish मछली पकड़ने को क्या बोलते हैं सर He is catching the fish. catching the fish okay thank you sir Yeah, okay, thank you very much, Mr. Junaid. Yes, okay, Mr. Wakas, Yes, sir. you kindly describe this picture. Okay. Sir, woman is doing exercise on yoga mat, and beside her, a boy is landing by parachute. Woman is coming out of the home, and she is ascending the ladders. Yes. A person is lying down on the beach chair. Mhm. A child is making the snowman. The girl is Yeah. playing with the sea lion and the rat. Two rats are being seen here, and they are also enjoying. A person is swimming into the pool. A child is lying on the floating mat in the pool. Mhm. Another boy is uh, putting on the sunglasses and having bath in the pool, and another boy is trying to jump into the pool, and right now he is standing on a plank jumping plank. A chef is also being find being finded in the pool. A fish is swimming. A cat is trying to fish. It's trying to get it. And Yes, a I think that. starfish is trying Ji. to slide into the pool. Mhm. Okay, okay, good, good. Okay, thank you very much, Mr. Junaid. Yes, G, Mr. Mustafa. Yes, sir. Yes, so kindly describe this picture using present continuous. Yes, sir. I'm saying I'm seeing different people and different activities doing. Mhm. I tell you about what are you doing this time. But ladies first. Left side blue, purple one girl staring, climb the stairs. She is climbing the stairs. Good. She is climbing the The stairs. stairs. Mhm. The Yes. and in the sir, a girl playing with teddy bear, and beside the girl are take, having a sun bath, Mhm. Yes. and yes, and a boy jumping the pole,
and a boy swimming in the water in the pool, Yes. and a boy and the chef is cooking the meal. Yes. ठीक sir. Okay, yes, that's me. Thank you very much. अच्छा, जी, Miss Madiha, did you take part in this activity? जी सर अच्छा, आपने बताया इस एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है? सर कर चुकी हूँ ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी, मिस्टर उस्मान। Okay, I think you are facing a bit of internet issue. आपको अगली एक्टिविटी में मैं चांस दूंगा। जी। So the second function is to show longer actions in progressive times. कि जब कोई longer action हो रहा होता है, ज्यादा जो वक्त ले रहा होता है, तो उसके बारे में बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? We use present progressive या present continuous tense. सही? For example, I am studying to become a teacher these days. सही? So these days का जो phrase है, you can use it to tell about a continuous progress, एक लंबा progress बताने के लिए। सही? कि मैं इन दिनों टीचर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ। She is reading the novel The Great Expectation these days. कि इन दिनों वो novel The Great Expectation पढ़ रही है। We are preparing for the exams these days. कि इन दिनों हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सही? And the last function is to express a planned action in near future. कि जब आगे आने वाला मतलब कोई आने वाले जो दिन हो या आने वाला जो महीना हो, जब उसके बारे में आप बताते हैं, तो प्लान एक्शन, अच्छा वो एक्शन जो कि आपने प्लान किया होता है पहले, जिसके बारे में सोचा होता है और जो आप कर रहे होते हैं, यू आर डेफिनेटली any sort of action that you have planned and you're definitely doing. So you express that sort of action in present continuous as well. For example, I am meeting my friend on 3rd February. We can say I am meeting my friend on 10th of July. कि 10 जुलाई को मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। She is celebrating her birthday tomorrow. कि कल वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। Okay. Yes, and one more sentence. We are visiting our parents next week. कि अगले हफ्ते हम अपने वालिदैन से मिलेंगे। They are completing this course next month. कि वो लोग ये कोर्स अगले महीने पूरा करेंगे। Dhanu is flying to Canada a couple of days. In a couple of days. कि धानु अगले आने वाले दिनों में कनाडा जा रहा है। सही? So you can use present continuous to show a planned action in future. के जो ऐसा एक्शन हो जो कि आपने पहले से प्लान किया हो, सोचा हो, और वो आप करेंगे, या कोई भी बंदा वो डेफिनेटली करेगा वो एक्शन। सो यू टेल ऑफ दोज एक्शंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, सो हियर इज अनदर एक्टिविटी। अच्छा, इस एक्टिविटी में क्या करना है आपने कि यू हैव एक्चुअली 3 टॉपिक्स, माइनर टॉपिक्स, and let's say it's a role play activity. You are a news reporter. You have to become a news reporter and tell the live news about either a house on fire, people protesting against the load shedding, and asking tourists about different beautiful views in Kashmir. So let's say कि आप जो है ना एक न्यूज रिपोर्टर हैं। सही है? आप आपको अगर न्यूज रिपोर्टर देखेंगे, न्यूज हर कोई देखता है, तो उसमें क्या करना है कि अगर आप न्यूज रिपोर्टर हैं तो आपने इन तीनों टॉपिक में से किसी एक पे बात करनी है। सही? उसमें से एक टॉपिक ये है कि हाउस ऑन फायर, की एक हाउस जो है, एक घर है, उसको आग लगी है, तो आप वो एक बयान कर रहे हैं लोगों को। सही? दूसरा टॉपिक ये है कि पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लोड शेडिंग, के लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती रहती है पाकिस्तान में, नो डाउट। तो उसमें क्या करना है कि आप जो है ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि लोग लोड शेडिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये काम किया जा रहा है, और लोग इस चीज की डिमांड हुकूमत से कर रहे हैं कि लोड शेडिंग कम की जाए, बिजली की बिल कम की जाए। Now, the third topic is asking tourists about different beautiful views in Kashmir. कि आप कश्मीर आए हुए हैं, वहाँ आप टूरिस्ट को देख रहे हैं और आप व्यू को देख रहे हैं खूबसूरत, और आप वो बयान कर रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पहाड़ पर ये है, कश्मीर के पहाड़ इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, इस किस्म के दरख्त हैं यहाँ, इस किस्म के जानवर हैं, इतने लोग आए हैं कैंप्स और कैंपिंग वगैरह करने के लिए। जी, तो दीज आर द 3 टॉपिक्स, और इनमें से किसी एक पर आपने जो है यू हैव टू रोल प्ले। यस सर, मिस आशा, आई विल स्टार्ट विद यू। Good evening and welcome to Achiever Voice News on TV1. I'm Aisha Irfan and reporting to you from Colombo.
Let's start off with a look at your headlines. Starting off with local news for this evening. I'm here to developing situation where a building is on fire. The blaze broke out earlier this evening, and firefighters are currently tirelessly to bring the flames under control. The cause of the fire is still unknown at this time, but emergency services are on scene and working to ensure everyone's safety. We will continue to provide updates as we receive more information. See you after a short break. Thank you. Okay, that's great, that's great. बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिविटी की नुमाइश आपने जबरदस्त. That's great. Thank you very much. Yes. Thank you, sir. I spent all the day to prepare this activity. No, even your tonality आपने जो टोन का यूज किया है वाकई वो जिस तरह एक मोनोटोनस सी टोन होती है हेडलाइंस बताती हुई जो न्यूज एंकर न्यूज रिपोर्टर बताते हैं. So really great. Thank you very much. जी. You're welcome, sir. Okay. Yes, Mr. Osman, you want to do this activity? I hope you got the meaning कि आपने करनी किस तरह है. जी. जी, Mr. Yes, I want Osman. to talk about Kashmir tourist. Yes, can you hear me, sir? जी, I can hear you. Good evening. This is Usman Habib reporting live from my YouTube channel. I'm right now in Kashmir Valley, and there are a lot of tourists. I'm now in Kashmir, asking tourists about the beautiful views here. One tourist, Mr. Mustafa, says, I'm enjoying the mountains and the serene lakes. Another tour adds the information. The scenery is beautiful and the weather is perfect there. Kashmir, I'm seeing the beautiful views on the back side of my camera. The river is flowing with stones, and I'm seeing the natural beauty here in Kashmir. Good. Really great, particularly with that YouTube thing. G. Actually, meanwhile, I'll take Ms. Nazia Ahmed. G. So kindly become a news reporter and you can choose any topic of your liking. Okay, sir. Sir, I choose the second one. People protesting against the load shedding. And firstly, now good afternoon. I am Nazia from World News Channel, and I am standing on the Karachi main Karachi and Sadr. Here the people are protest about the load shedding. There is here is light problems are and is the very difficulties people are facing a difficulties because of the load shedding, and it's also uh, most of the people are very tired, and Yeah, good. And very angry to and protest, and they
and they against on the load shedding, then they don't give any bills because of they are not getting the light properly. That's it. Okay, That's good, it. good. Good, good. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, Mr. Ati Ahmed. Yes, you did a great job. Yes, sir, Mr. Osmanavi, kindly, if you are not facing any issue, you can continue. Ji. Yes, I was facing internet issue. Yeah, it's okay. So I was reporting from Kashmir. Yes, I'm traveling from Rawalpindi to Kashmir, and it's very amazing tracks there are where from I'm going to there. It has a lot of valleys, Kashmir, that are so very fantastic, and they are so amazing. I never seen this type of beauty ever. So some of the tourists I met with them. They also shared their information with me. So they told me that the rain is there is a rain which is there is rain and drizzling which is continued from last week, and there are a lot of difficulties in the travel, and landsliding also participating very harmful issues in Kashmir. But the beauty we are seeing is very so amazing, and Yeah. so we have to move. We're trying to move next day for the Mansehra and the Siran Valley from Kashmir. There we will explore the other valleys, and there we also have we are participating with other teams to collaborate and want to explore the other beauty of these sceneries. Yes, yes. I think yes, that's enough. Thank you very much. Yes, that was a creative one. Osmanavi. Okay, yes. G. Mustafa. G. Mr. Mustafa. Okay. Yes, Mr. Okas. Sir, was this assignment given in the last session? G. This topic was assigned to prepare in the last session or just randomly? No, I didn't get you. What you mean? Anyhow, I'm Vikas Ali. And right now, I'm at the Murray Hill Station and noticing a lot of people as a tourists coming from all around Pakistan and all over the world. And most of people who I have witnessed here are from Pakistan, and particularly most of people are belonging to the Punjab province, and it might be the majority of all. And the second largest majority is coming from the Sindh province, and most people are belonging to Karachi. People are looking here very crazy about the beauty of the Queen of the Hills, the Murray, and people are glowing. They are very happy to come here because it's a scorching heat all around the Pakistan, and people have get rid from that heat wave, and they have come here to enjoy and spend their time in some cool place. And this is very
you can say the amazing weather here. It's 25 degrees centigrade. And if we discuss about the rest of the Pakistan, it might be the 20 degrees less than the rest of the all over Pakistan, the temperature. And I have also witnessed some foreigners who have come from England and USA and some other part of European countries. And when I interviewed them and found that why they come here in Pakistan, and as you have a lot of opportunities to travel around the world, and they told us that this is the beauty of Pakistan. Yes, of course, there are many beautiful places, more than beautiful places in all around the world than Pakistan. But we have come here to experience the cultural originality in this country, because the people that we find here are belonging to some particular culture, and we don't explore the hills and mountains and the landscapes. We explore the people all around the world. So uh, as we visit all the countries of the world, we are also visiting the Pakistani culture and exploring the Pakistani culture that is definitely different from the rest of the world. And they most of the people were happy to come here, and they were exploring. But many people were uh, being find being found to be complaining about the restaurants and their administrations, because they was overcharging everywhere. Even people were not cooperating with the tourists, because they were taking the benefits of the season, and they were overcharging up to the extreme level. I think that's it. Yeah, that's no benefit. Okay, thank you very much, Mr. Abbas. Yes, now moving onwards to Ms. Madiha. Ji, Ms. Madiha. Yes, sir. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Ji, carry on. Hello, I am Madiha. I am a news reporter for news channel. A house, sir. I choose a first house on Okay. fire. Okay, great, great. A house in the street on fire. The flames are coming out. People are gathering around the house. They are throwing the water on the house. Some people are also trying to go inside the house to save the inmates. The fire brigade has a right on the spot. They are trying to control the fire. Thankfully, they have saved the inmates. There is no loss of life, but there great loss of property. Okay, great. That's great. Thank you very much, Ms. Madiha. Ji. Okay, yes, I think all of you are done. कोई रहता है इस activity में? Kindly raise your hand if anyone is left. I think Mr. Mustafa is left. Ji. Yes, sir. Yes, Mr. Mustafa, kindly do this activity on any one Yes, of the sir. topic out of this. Second one, Okay, sir. Hello, everyone. You are watching ABC News. I'm Mustafa, your newscaster. I'm telling you about your load shedding protest in Umarkot. Good. There are many people protesting front of the press club. They want to load shedding remove in the whole area. They all deny condemn to government reasons, because they are suffering from different typical situations, because there are hot summer and also and summer holidays, kids are in the home, and we are patients suffering from their illness, and be, every woman having have a difficulties. Yes. Ji, Mr. Mustafa.
जी मिस्टर मुस्तफा, काइंडली कंटिन्यू. Yes, sir. Okay, bus. Okay, very great. Thank you very much. Yes. Yeah, okay, thank you very much. Let's continue ahead. So yes, we have another minor phrase. जब आप क्या है कि present continuous की जो बात आती है, and when you are using always, तो क्या शो कर रहा होता है? The repetition and irritation with always express the idea that something irritating or shocking often happens. Negative emotions. अच्छा, तो क्या है कि जब आप ऑलवेज यूज करते हैं ना इसमें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सही, तो वो क्या दिखा रहा होता है कि जब आप किसी चीज से तंग होते हैं या कोई बंदा किसी चीज से तंग होता है, सो क्या है कि उसमें फिर आप ऑलवेज यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, शी इज ऑलवेज कमिंग लेट टू द क्लास, कि वो हमेशा क्लास लेट आती है. हम कहते हैं ना हमेशा, एंड वी इवन एम्फेसाइज दिस, हम हमेशा पे फिर जोर भी देते हैं इस तरह, और कहते हैं कि हम हमेशा जो है ना वो हमेशा क्लास लेट आती है. साथिया ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, साथिया हमेशा मुझे तंग करती है, कर रही होती है. सही या अच्छा. बाय द वे, एंड ऑल्सो क्योंकि ट्रांसलेशन इस तरह की चीज है ना कि इट डिफर्स फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज. जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें क्या है कि बाज़ों का थोड़ी चेंजेस आ जाती हैं. नाउ इन इंग्लिश वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सही है, शी इज ऑलवेज कमिंग लेट टू द क्लास. लेकिन उर्दू में हम इस तरह नहीं बोल सकते कि वो हमेशा क्लास लेट आ रही है. उर्दू में हम बोलते हैं कि वो हमेशा क्लास लेट आती है. We say it in present simple tense. सही, so there lies the difference. Okay, you are always talking with others in class. कि तुम हमेशा क्लास में दूसरों से बात कर रहे होते हो. Students are always complaining. कि students हमेशा complain करते हैं. सही, so ये always किस लिए आप यूज करते हैं? You use it for irritation. जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं या किसी और के बारे में बताते हैं, किसी और की आदत से आप तंग आते हैं ना, तो आप कहते हैं ना कि हमेशा मुझे तंग कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बंदा है आपको तंग करता है या बातें बहुत करता है, सो यू से कि यू आर ऑलवेज टॉकिंग, आप हमेशा तंग कर रहे होते हैं, आप हमेशा बातें कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा बातें करते रहते हैं. सही, सो यू यूज दिस वर्ड ऑलवेज फॉर इरिटेशन. यस मिस्टर मुस्तफा, लेट मी अनम्यूट यू. जी. Sir, what is the difference in the sentence? She is always coming late to the class. ठीक sir? जी. Always she is coming late to the class. She is coming late to the class always. अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है मुस्तफा इसमें. दैट्स नाइस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड. इसमें सिर्फ क्या है कि जी हमने मतलब ये जी जी We बोलिए. can say three different sentence same way. Exactly. You can Thank you, say sir. the same. Yes, you can say the same sentences in different ways. Always she is coming late to the class. ये भी ठीक है, मतलब आपको वही देता है. ये तीनों जुमले आपको वही मतलब देते हैं. She is always coming late to the class. She is coming late to the class always. सही, because ये इसमें जो है ना ये आपका वो है, you call this adverb. Yes, this is adverb. तो एडवर्ब जो है ना इसकी कोई खास स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती. आप शुरू में भी लगा सकते हैं, बीच में भी आता है, आखिर में भी लगता है. सही, तो यस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अच्छा, सो दीज आर सिंपलर वंस फॉर नाउ बिकॉज वी आर आल्सो रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम. हमारे पास 20 मिनट्स रह गए हैं. तो यही क्वेश्चन आंसर की एक्टिविटी है, तो इसको और इसके साथ 2-3 और एक्टिविटीज है, उनको फॉर नाउ मैंने जो है ना स्किप कर ली है. जी. क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यस और नो के जिनमें आंसर देंगे. सो दीज आर सिंपल वंस. अच्छा, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ओके, फॉर दीज टू एक्टिविटी राइट नाउ आई एम स्किपिंग दीज, बट लेटर ऑन इफ वी कवर द होल क्लास इन टाइम, तो अगर हमारे पास टाइम रह गया आखिर में जाके तो फिर इंशाल्लाह इस एक्टिविटी की तरफ आएंगे. एंड इन केस अगर टाइम नहीं रहा तो ये कोशिश करें कि ये एक्टिविटीज फिर आप खुद करें. सही. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑब्लिगेशंस, बिकॉज ये भी जो है ना हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए पहले मेरी कोशिश है कि इसको हम कवर अप करें. Obligations. So obligations, what is obligation? Obligation is anything or things that are necessary to do or to give advice. जब कोई चीज कोई काम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है करना, तो उस काम को आप ऑब्लिगेशन बोलते हैं. सी थिंग्स दैट आर नेसेसरी टू डू. या फिर जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं तो वो भी किस में आ जाता है? वैसे ऑब्लिगेशन में तो वो नहीं आता, लेकिन इधर पर जो है ना
बिकॉज शुड जो है हम उसको एडवाइस के लिए यूज करेंगे एंड मस्ट विल बी यूजिंग मस्ट फॉर ऑब्लिगेशन। अच्छा, शुड ऑब्लिगेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और एडवाइस के लिए भी, बट मस्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन के लिए यूज होगा। नाउ व्हाट इज देयर यूज? ओके, मस्ट या मस्ट नॉट या मसंट, सही। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जब आप दिखाते हैं कि आपने कोई काम या आप किसी और को बोलते हैं कि उस बंदे ने कोई काम जरूर करना है। हम उर्दू में बोलते हैं ना कि तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल, सही। While when we use should, okay, you should go to school, yeah, you shouldn't go to school today. Okay, it's raining, you shouldn't go to school today. कि आज बारिश हो रही है तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, सही। हम कहते तो हैं, हम या तो एडवाइस के सेंस में भी यूज होता है, सही, कि यू शुड ईट हेल्दी फूड्स, के आपको अच्छी खुराक खानी चाहिए, इट्स एन एडवाइस। या हर किसी इसको माइल्ड ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। ऑब्लिगेशन यही चीज होती है कि जब आप किसी को कोई काम करने को कहते हैं या किसी काम से मना करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। और ये शुड और मस्ट वाले जुमले भी और उर्दू हमेशा आखिर में इनमें चाहिए लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही। सो मस्ट और मस्ट का नेगेटिव क्या है? मस्ट नॉट या मसंट। मस्ट, इसको आप मस्टंट नहीं कहेंगे, इट्स कॉल्ड मसंट, सही। द टी इन द मिडल हेयर इज साइलेंट, बीच वाला टी है, दिस इज साइलेंट, मसंट। Okay, should या shouldn't, सही। So you should school or you should go to school today. You shouldn't go to school today because it's raining. But tomorrow you must go to school today. लेकिन आज आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन कल आपको लाजमी स्कूल जाना चाहिए। Okay, so you can see here कि स्ट्रक्चर क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट या शुड, और इनके साथ है ओके बेस फॉर्म ऑफ फॉर्म रहेगा। यू कैन नॉट यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ फॉर्म, आपको सिंपली जो फर्स्ट फॉर्म होती है या बेस फॉर्म वही आप यूज कर सकते हैं इनके साथ। सो वी आर गिवन एग्जांपल्स हियर के पहले मस्ट के बारे में कि यू मस्ट एडमिट योर मिस्टेक, कि आपको अपनी गलती जरूर माननी चाहिए। वी मस्ट ओके, वी मस्ट टेक द टिन नंबर, TIN नंबर, तो हमें ये टिन नंबर जरूर लेना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर द टैक्स रेट, तो हुकूमत को चाहिए कि टैक्स रेट पर बात करे, सही। यू मसंट यूज ड्रग्स, आपको ड्रग्स यूज नहीं करने चाहिए। निमल मसंट यूज फिल्थी वर्ड्स, निमल को गंदे अल्फाज, बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आई मस्ट कंट्रोल माई एंगर इन पब्लिक प्लेसेस, कि मुझे चाहिए कि मैं अपने गुस्से को काबू में रखूं, या मुझे चाहिए कि मैं अपने गुस्से को लाजमन काबू में रखूं। वी मसंट टेक ब्राइब्स, हमें रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, सही। सो यू कैन सी के ये मस्ट किस केस में यूज होता है कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम के केसेस हो ना, इन दोस केसेस वी यूज मस्ट, सही। नाउ कमिंग टुवर्ड्स शुड, यू शुडंट ब्लेम अदर्स, आपको नहीं चाहिए कि आप दूसरों पर इल्जाम लेकर आए। वी शुड सैनिटाइज और हैंड्स एवरी टाइम, हमें चाहिए कि हम अपने हाथ सैनिटाइज करें या सैनिटाइजर से धोएं हाथ। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स, हुकूमत को चाहिए कि क्या करें, ये चीजों की कीमतें कम कर दें। यू शुडंट ड्रिंक एरेक्स, एरेक्स बाय द वे दिस इज सम श्रीलंकन ड्रिंक, सही है, जिस तरह की बेयर शराब होती है ना, वाइन, तो एरेक भी उस किस्म की ड्रिंक है जी। हाँ, अच्छा, फिल्थी वर्ड्स मतलब कि बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, गालियां वगैरह हो गई फिल्थी वर्ड्स, सही। ओके, आई शुडंट गेट एंग्री, मुझे नहीं चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। Okay, so here is the activity, a little bit of activity आगे। Yes, you shouldn't use my clothes, कि आपको नहीं चाहिए कि आप मेरे कपड़े इस्तेमाल करें। Good one, Miss Aisha. Okay, now here's the activity। अब करना क्या है कि इनके हवाले से भी हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं। पहली एक्टिविटी मस्ट और शुड, ये दोनों मिले हुए हैं, एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी शुड की अलग से एक्टिविटी है और मस्ट की अलग से एक्टिविटी है, सही। सो कमिंग टूवर्ड्स शुड, करना क्या है इसमें कि मैनेजर्स शुड ऑनेस्टली वर्क, इस तरह। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सही। तो उसमें आपने जो है ना ऐसे यूज करना है कि पहले में शुड यूज करना है, सेकंड में शुडंट यूज करना है, सही, एक ही सेंटेंस। फिर अगला मस्ट का जो सेंटेंस है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, और उसमें सर्कमस्टांस भी इस तरह होनी चाहिए कि वो थोड़ी एक्सट्रीम सी और सख्त सी बात की गई। फॉर एग्जाम्पल, teachers should practice teachers should practice the lecture for their student, sahi। Teacher shouldn't be wasting their time, teachers must not be drinking, teachers must not be smoking while in school,
सही कि टीचर को नहीं चाहिए कि सिगरेट वगैरह पिए जब वो स्कूल में हो। सॉरी मस्ट नॉट, तो वो नेगेटिव वाला हो गया। एंड टीचर्स मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द लेक्चर, और टीचर को चाहिए कि लेक्चर से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रिपेयर हो। सही। तो इनमें से आप कोई सा एक वर्ड लें, या यू कैन यूज योर ओन सब्जेक्ट्स एज वेल। और उसमें आपने क्या करना है, दो जुमले शुड के बनाने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देन दो जुमले मस्ट के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस, स्टार्टिंग विद यू मिस्टर उस्मान। Yes, sir. As a manager, जी my staff must have to follow the rules of the company. हम्म, I should have to manage all the activities of my subordinates. हम्म, We managers must have to conduct training session for our subordinates. Manager mustn't give favor to his preferred one. could you repeat this sentence again? Manager must not giving favor to his favorite employees. Okay, good. Okay, thank you very much. Yes, Ms. Aisha. Sir, worker should come on time. Mhm. Worker shouldn't steal the things or hide the things. And worker must tell a lie. And one more, worker must do some rest. And worker mustn't do work hard Okay, okay. according to his capacity. Okay, thank you. Yes, Ms. Fadiha. Yes, sir. जी Student should hard work. it's up to you जी, कोई सा भी है। Student, जी students. student should not hard work. Student must be hard work. Student must not hard work. अच्छा, शुड के और मस्ट के जुमले चेंज होने चाहिए इसमें। जी Yes, sir. शुड के और मस्ट के जो सेंटेंसेस हैं ना, दे वो चेंज होने चाहिए। Okay, sir. Okay, so thank you very much, Mr. Diya. Next, I'm going towards G, Mr. Junaid. Yes, sir. जी Student, one minute. Student drank some water in the class time. शुड यूज करेंगे, या तो शुड या मस्ट, ये सारे आपने यूज करेंगे। Should मतलब कि स्टूडेंट्स को क्या काम करना चाहिए या क्या काम नहीं करना चाहिए। जी, तो उसके लिए शुड और मस्ट। should use the drank water in the class outside. ये कह सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स मस्ट ड्रिंक द वाटर आउटसाइड द क्लास, कि उनको चाहिए कि क्लास से बाहर पानी पी, क्लास के अंदर ना पी। सही। Yes. यस, और मस्ट नॉट का भी एक जुमला बनाया। तो अगर मिस्टर जुनेद समझ नहीं आई तो दोबारा से मैं समझा दूंगा आपको।
सॉरी सर, आप दूसरा स्टूडेंट से पूछो तो मेरे को भी थोड़ा सा मसला इजाफा हो जाएगा, एक्सपीरियंस थोड़ा और भी मिल जाएगा। अब अच्छा, दूसरा किसी और से स्टूडेंट से पूछ। क्वेश्चन कर दो, मैं थोड़ा सुन, ओके यस यस, मैं थोड़ा और भी मजीद एक्सपीरियंस हो जाएगा इस बात में। ओके, चलो ठीक है। ओके, सो सुनाओ। थैंक यू। ओके, माय प्लेजर। मुस्तफा जी। Sir, where we use must and where we use should? अच्छा, समझाऊंगा आपको कि कहाँ पर इस्तेमाल Yes, होता yes, है। yes. Yes, ओके, yes. अच्छा, Please. शुड देखें जी। तो शुड जो है ना, जब आप किसी काम का कहते हैं कि ये काम जो है ना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप किसी को सिंपली जब नसीहत करते हैं, सही, कि ये काम जो है ना इस तरीके से करो या इस तरीके से नहीं करो, या ये काम करो या ना करो। नसीहत तो देखिए बड़ी पोलाइट सी चीज होती है ना, सही। तो तब हम क्या जी। करते हैं, तब हम शुड यूज करते हैं। लेकिन मस्ट क्या, जब हम सख्ती से किसी को, सख्ती से ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से, लेकिन हमारे जो अल्फाज या तो वो सख्त हो सकते हैं, या जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात होती है कि उसको अगर गलत किया तो उसका किसी तरीके से किसी इंसान को नुकसान हो सकता है। तो उससे जब हम मना करते हैं या वो काम करने को बोलते हैं, तो उस केस में हम मस्ट यूज करते हैं, सही। तो मतलब कि शुड Yes. हम सिर्फ और सिर्फ नसीहत के लिए यूज करते हैं, सही है, जब हल्की फुल्की नसीहत आप किसी को कहते हैं। और मस्ट जब आप कोई काम का कहते हैं कि ये काम तुम्हें लाजमी करना चाहिए या लाजमी इस काम को नहीं करना चाहिए, तो उस केस में हम मस्ट यूज करते हैं, सही। So for Yes, example, sir. students must follow the rules of the school. कि Yes. स्टूडेंट्स को चाहिए कि स्कूल के उसूलों को माने, उनके मुताबिक चलें, सही। वी मस्ट, एक और एग्जांपल दे दो कि वी मस्ट फॉलो कुरान एंड सुन्ना। हमें चाहिए कि कुरान और सुन्नत को और के मुताबिक जिंदगी गुजारें, सही। मस्ट क्यों लगा रहा हूँ Exactly, कि sir. हमें लाजमी चाहिए, सही जी। Yes, yes. जी, तो अभी शुड का और मस्ट का जिम्मा है जी। Yes, sir. I'm ready. गुड। Yes, sir. I'm ready. जी I जी, say. कैरियर। जी जी, कैरियर Yeah. स्टार्ट। Sir, first one must. You must not. Sir, must not के साथ यूज करता है, mustn't के साथ यूज करता है. मस्ट एंड मस्ट नॉट एक ही चीज है। ठीक है. You mustn't shout in the class. गुड गुड जी। You should follow the rules in our school, or you should not. You shouldn't to meet a stranger. गुड गुड, एंड एक मस्ट का ही बना भी, मस्ट का सिर्फ रह गया Sir, must का बना दें yes. जी। You must pray 5 times in the day. ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मिस, ओके, मिस मदिया, आपने सेंटेंसेस बनाए हैं? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। चलें, Sir, जी, अच्छा जी, मिस मदिया, जी, यू आर सेइंग समथिंग। ओके, yes, sir. मैं कह रही हूँ, मैं कोशिश की है मैंने सेंटेंस बनाने की, लेकिन सही। मुझे कुछ खास समझ नहीं आई इसकी, और ना ही मुझसे अच्छा सेंटेंस बन पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आगे एक और हमारी एक्टिविटी है ना, तो उस पर फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगा, खैर। चलिए, अच्छा मिस्टर जुनैद, काइंडली जी, काइंडली डू दिस एक्टिविटी। जी मिस्टर जुनैद। अच्छा जी, लेट्स कैरी ऑन towards the second last activity कि what should be done। so इसमें से जो है ना, अब क्या है कि आप लोग की अब ये 3 सिनारियोज दिए गए हैं आप लोग को, and you have to choose any one। पहला सिनारियो ये है कि your friend is feeling stressed about exams। तो आपका दोस्त जो है ना वो एग्जाम के हवाले से टेंशन में है, तो आप उसे नसीहत करें कि एग्जाम के बारे में क्या करना चाहिए, तो शुड के जुमले आपने सारे यूज करने। Second scenario, your brother or sister wants to improve her English या his English skills। तो वो आपका भाई या बहन जो है अपनी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है। सो नाउ आपने उनको नसीहत करनी है कि क्या क्या किया जाए इस तरह काम कि इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव। एंड द थर्ड सिनेरियो इज योर पेरेंट्स आर इनडिसाइडेड वेदर टू गो टू अनदर सिटी फॉर सम अर्जेंट वर्क और नॉट बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू। कि शहर में आपके या आपके मुल्क में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आपके पेरेंट्स अब इनडिसाइडेड हैं, वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि दूसरे किसी मुल्क, किसी सॉरी दूसरे किसी शहर किसी खास काम से जाया जाए या नहीं जाया जाए।
तो आपने उनको नसीहत करनी है कि या तो जाना चाहिए उनको और नहीं जाना चाहिए। जी, तो मिस्टर उस्मान, स्टार्टिंग विद यू इन दिस एक्टिविटी। Yes, so जी, first one. While my first one, friend is feeling stressed about exams, he should have to prepare his exams and make a timetable. good. He must have to take short breaks while studying. Suppose he is studying uh, 2 hours, so he must have to take a short break of 15 minutes. Then he must start the remaining. So he should have to he should have to uh, he should have to uh, he should have to make a space for study. He should have to Yes, I think he should जी, have to eat better for his health to focus on the exams. mhm. He should have to recall the previous lectures that Yes, he has. yes, and instead of using should have to, you can simply use should. You should do this and do that and do that. जी, Okay, sir. हम्म। तो शुड भी में वही हम जो प्रीवियस अभी लेके आए थे उसी को ही सिनेरियो यूज करेंगे। हाँ, उसी को यूज करें जिस तरह आप should पहले यूज कर रहे थे ना, तो इसी तरह जी जी यूज सर। करेंगे उन्हीं के हवाले से एक्टिविटीज। ओके Yes, okay, I think So- that's more than जी। so my जी sister उस्मान। wants to improve her English, so she should have to speak daily. She should have to prepare the class before attending her class. Yes, She and should be sorry for interruption, Mr. Osman. You can use it like this कि for example कि आपका दोस्त है, आपका भाई बहन या आपके parents आपके सामने हैं, तो for second person में बात करें कि you should do this, you should prepare daily, you should follow my advice, इस तरह आप use करें, सही? yes. जी। Yes, I'm reading as the second one. While my sister should be energetic for taking the class. Okay, I think that's more than enough because we are also running short on time, Mr. Yes, Osman. thank you. Thank you very much. Okay, yes, Ms. Aisha. इनमें से कोई से दो लेने, फिर उसके बाद हम जरा मस्त की एक्टिविटी पे जाएंगे। जी जी Ms. Aisha। Sir, my parents are currently unable to decide whether to travel to another city for urgent work despite the curfew. They know that this work is very important and need to be done immediately. However, due to the curfew, there are many issues and risks involved in traveling, such as safety concern and legal problems. They are weighing the urgent need for the work against the need to avoid these issues and risks. They are also considering alternative solutions such as online meeting or postponing the trip. But the urgent nature of the work make this solution difficult. So I recommend them they should stay at home and they should try to solve their problem at home. Okay, thank you very much, Ms. Aisha.
Yes, now, Ms. Madiha, kindly give us your advices on any of these scenarios, any one of these scenarios. Ji, Ms. Madiha. Gosh. Yes, sir. First one, your friend is feeling stressed about exam. You must revise all your lessons carefully and should not be stressed. Second, your brother sister want to improve her English skills. You must improve your grammar and then try to speak with your friend to practice. Good. Yeah, Yes. that's it. Oh, Last one. okay, okay, thank you very much. Yes, Mr. Mustafa. जी चलिए आप भी एक्टिविटी कर लें उसके बाद फिर मस्ट के लिए थोड़ा सा Yes, sir. जी My friend said about exams. I advise to you about exam. You should be reading before paper. You should be एक minute है. You should be short note on the topic, and you should revise your course, and you should revise your subject, your paper, your exam papers. Yes, sir. good. Thank you very much. Okay, sir. Yes, now moving towards our final activity for the day. Pick one of your favorite scenarios of इनमें क्या करना है, you have to use must here. Your principal telling the discipline rules to students in a school. कि आप प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के तो आपने स्टूडेंट्स को उसूल बताना है, रूल्स बताने हैं डिसिप्लिन के स्कूल में कि स्टूडेंट्स को किस किस्म के उसूल जो है ना फॉलो करना चाहिए. The second scenario is at the library, you are a librarian giving instructions to the reader regarding the rules of library. तो सेकंड में आप एक लाइब्रेरियन हैं जिसमें आपने क्या करना है, रीडर्स को इन्फॉर्म करना है कि किस किस्म के रूल्स फॉलो करने चाहिए लाइब्रेरी की, कि फॉर एग्जांपल शोर नहीं करना, किताबों को उठाकर पढ़कर अपनी जगह पर वापस रख देना, इस किस्म के रूल्स. And then the third one, you are a flight attendant giving instructions to the passenger just before the flight is about to take off. कि फ्लाइट जो है ना उसके उड़ने से पहले आप फ्लाइट अटेंडेंट है जिसमें आपने इंस्ट्रक्ट करना है पैसेंजर्स को, सही है, कि किस तरह जो है ना आपने फ्लाइट के दौरान क्या करना है, ज्यादा टेक ऑफ से पहले उठना नहीं है, आपने अपनी जगह पर बैठ के रहना है, जिस किस्म के उसूल आप चाहें, मतलब यू कैन मेक इट ऑन योर ओन. जी, सो यस मिस्टर उस्मान. Yes, sir, I did not understand the last one of should be. So I will use this. You must, you are a principal telling the discipline rules to the students. The students must have to come to reach the school on time. They must have to follow the rules that are that are written on the notice board. And they must have to prepare the daily homework and short tests and exams on time, and they should have to their parents should have to in contact Yes, with sorry teacher. for interruption, Usman. Yes, sir. Actually, ये जो आप should have और must have का structure यूज करें, इसका मतलब ये बनता है कि आपको करना चाहिए था when you are referring to the past, सही, लेकिन हम अभी की बात करें present, तो उसमें have to की कोई जरूरत नहीं है, सही है, आपने बस सिंपली कहना कि you should do this and you must do this. जी जी क्या यूँ Teachers must have to teachers must have to uh, the teacher must also have to follow the rules, and students
must have to do their homework on time and submit their activities. The students must have to participate in other uh, curricular activities. The student must not have to must not have to जी yes Usman, can you hear me? yes sir, I'm here. Must not have to participate in fighting with each other. Okay. Okay, I think that's Yes, more sir. than enough. Ji. Okay, Thank Salim, you. thank you very much. Ji. Yes, Miss Aisha. Sir, here I will describe principal telling the discipline rule to the students in school. So, good morning, students. Welcome to the new session. I'm your principal, Aisha Irfan. We will give you very informative, energetic, lovely, and friendly environment. We all together enjoy our session while studying and different co-curricular activities. You must be obedient, you must be punctual and well disciplined and well organized while the session. Thank you. Okay, thank you very much. Yes. Yes, Mustafa. Yes, sir. Yes, sir, I use. You are the principal telling the discipline rules to the student. Sir. Okay. Hello, students. I'm your principal. I'm principal at your school. How are you? How are you doing? Yes. I telling you about our rules. You must follow our rules and please listen to me. You must come school on time. You must, sir, use must या must be. Must. Don't use specific. Must be, must be. Yes. You must come on school on time and you should proper or you must take assembly on time. Students and teachers arrive at school on the time and teacher must arrive on the time. Students, those students, you must not fighting each other and you are must caring others in school and you must not shout it in our school and you must homework on time. You must doing homework on time. Yes, you must do homework on time. Ji. Do homework on time. And you must done your lunch on time. Eat lunch on time. Okay, Yes. sir, I think Ji, that's more than Ji. So, thank you. Okay, yes, and finally, Ms. Madiha. Yes, sir. Kindly pick any one of these scenarios. Yes, sir. First, you are a principal telling the rules to the student in a school. Yes, I am a principal. You must come on time in school. You must not waste your time. You should focus on your study. You must obey your teachers. That's enough. You must follow the rules of school. You must learn the lesson of a daily basis.
Enough, sir. Okay, जी, okay, thank you very much. Yes, yes, Miss Aisha. Sir, I have a little bit idea and comments about the flight attendant. Can I say something? Yeah, why not? Tell me. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is your flight attendant speaking. We are currently experiencing some turbulence, but there is no need to alarm. Please remain seated with your seat belts securely fastened until the seat belt sign is turned off. Thank you. Okay, Shani, thank you very much. Yes, that was quite creative. अच्छा चलिए मैं आपको होमवर्क समझा देता हूँ because we are also running short. We have only 3 minutes left. अच्छा, so express in 30 seconds to 1 minute of a video or audio depending on you, the sort of problems you are generally facing in life and how you're trying to overcome those problems. Okay, आप किस किस्म के मसले अभी फेस कर रहे हैं, आप खुद से भी मतलब कुछ भी कह सकते हैं. इट्स अप टू यू. जरूरी नहीं कि आप अपने पर्सनल मसले फेस शेयर करें. आप कोई भी मसले मतलब खुद से बनाकर कह सकते हैं कि आई एम फेसिंग दीज इश्यूज, आई एम गोइंग थ्रू दिस, कि मैं इन मसलों से होकर गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ और मैं इस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सही, ये 30 सेकंड से 1 मिनट की वीडियो में आपने या ऑडियो में बताना है. सो यस, एनी क्वेश्चंस? जी, सर जैसे ये हम 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो हम बनाते हैं, अक्सर आपको फॉरवर्ड भी करते हैं. तो इसमें हम बात स्पोकन क्लासेस में हम देख रहे होते हैं कि उसके अंदर चूंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा होता है टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट्स. तो हम चूंकि इसके अंदर हम ऑडियो में तो हैं, लेकिन नो डाउट के मेल्स एंड फीमेल्स, और इसमें भी ख्याल है हमारा कि मिस आयशा से भी बात हुई थी, मैम आयशा से, कि क्योंकि इस क्लास के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर हो गए या फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है उसका इतिहास, मुझे ये काफ़ी पसंद आया है आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके लिए. क्योंकि हाँ जी, क्योंकि हर किसी का नहीं होता मिजाज इस तरीके का कि वो जी. तो क्योंकि हम एज ए सिस्टर ब्रदर्स इन आवर क्लास, तो मेरे ये बात करने का मकसद है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, तो कभी हमारा कोई ऐसा सेशन जिसके अंदर हम ये जैसे आपकी हमारी आ रही है, तो इस तरीके से मुझे ये पता होता कि यार मेरी वीडियो भी जा रही है, मुझे दूसरे देखने वाले भी हैं. मैं ठीक है, शक्ल अल्लाह ताला ने हर किसी की जैसी बनाई है, तो लेकिन उसका ना एक इम्पैक्ट ये पड़ रहा होता है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ और मैं फेस टू फेस जब बात कर रहा हूँ तो उसमें, और जब मैं ऑडियो में कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर का जो मेरी खासतौर पर मैं बात करना चाहूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर हमारा फर्क आएगा. एग्जैक्टली. तो ऐसा कोई कि किसी क्लास में या किसी एग्जाम में या कोई इस तरीके का जिसके अंदर हमारी ये वाली झिझक जो है, जब हम प्ले करेंगे या कर रहे होते हैं ऑफिस में प्रोफेशनली, तो उसके अंदर भी हमारी ये चीज़ भी इम्प्रूव होगी. एग्जैक्टली. तो बाय द वे, असल में ओरिजिनली ये जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हालांकि टाइम एंड अगेन अगर आपको कोई अगर शुरू में मैं यही कहा करता था एंड इवन जब मैंने ये आपको कहा था कि कोशिश किया करें कि जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो वीडियोस ऑन किया करें, लेकिन ज़्यादातर जो खवातीन हैं उनको तो जाहिर सी बात इशू होता है. सही, तो इस वजह से जो है ना, हालांकि आपकी मर्जी की जब भी आप अपना रिस्पॉन्स दें तो अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. सही जी. ठीक है. ओके, so we are also okay, टाइम भी यहाँ पूरा हो गया है, क्लास भी शायद एनी टाइम अभी ओवर हो गई. सही, सो चलें इंशाल्लाह फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन डे 14. सही है, सब अपना Sir, ख्याल what रखिए. about the test? जी, यस, हाँ, टेस्ट जो है वो मैं सरफराज से पूछ लूंगा कि कब जो है ना उसका रिजल्ट अनाउंस होगा, बिकॉज वो मैंने पहले भी बताया क्लास के शुरू में कि मैनेजमेंट जो है ना वही टेस्ट आप लोग का चेक करते हैं, मैं चेक नहीं करता. सही, तो वो फिर मैं पूछ सर, कर और एक आपको. और क्वेश्चन मेरा ये है कि टेस्ट के लिए हमें पूरा फ्राइडे नहीं लेना चाहिए था. मींस वो तो एक ऑनलाइन टेस्ट था, वो तो हम किसी भी टाइम में कर सकते थे. हमारी पूरी एक क्लास मिस हो गई 2 आवर्स. असल में मुझे खुद ही इसी तरह कहा इन्होंने कि मतलब जो जिस दिन टेस्ट हो वो भी 8 से 10 के बीच हो तो ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यही टाइम हमारी क्लास का भी टाइम होता है. तो इन्हीं आवर्स में अगर वो लोग टेस्ट कंडक्ट करें तो गारंटी. बाकी तो सब यू, हाँ, वो जाहिर सी बात है कि एनी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन बस एग्जैक्टली, वो तो किसी भी टाइम पे हो सकता था. या तो चले ऐसे लाइव सेशन में टेस्ट होता, आप कुछ पूछते, तो वो समथिंग जी अनदर. जी
लेकिन Actually, see, I also have to follow the rules and regulations. That's सर why. जी Hello, sir. लेक्चर्स भी हो जाएंगे इंशाल्लाह सर पूरे इसी तरीके से भी जी जी इंशाल्लाह Sir, listen to me. इंशाल्लाह। जी Hello, sir. जी Listen जी to me. Sir, Yes, what should be done? इधर सेंटेंस में एक थोड़ी सी मुझे फीलिंग हो रही थी कि ठीक नहीं लग रहा, या इधर ये चीज होनी चाहिए थी, वो मैं आपसे कहूँ. जी जी What should be done में, ठीक सर. Your brother sister wants to improve her. हर के साथ ऑब्लिक में हिम हिज क्यों नहीं लगाया सर, या जरूरत नहीं थी इधर. हाँ, यहाँ मैंने भी अभी जब मैं बता रहा था आप लोगों को, इसी जरूरत नहीं ये असल में लगाना है, लेकिन वो असल में वो यहाँ एडिटिंग के दौरान मैं लगाना भूल गया था, वरना बाकी आपकी बात ठीक है, यहाँ लगता है his लगता है। क्या इससे पहले ब्रदर सिस्टर में लगे तो जरूरत नहीं है. जी जी तो जहाँ पर वो ब्रदर Hello, sir. सिस्टर लिखा तो ब्रदर सिस्टर में लग जी तो यहाँ पे अब जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हर के साथ हिज की जरूरत नहीं है. नहीं है, क्यों नहीं है, इस तरह मैं आपको अभी एडिट करके सही दिखाता हूँ। मतलब दोनों यूज कर सकते हैं हम, ब्रदर सिस्टर के साथ भी और हम हिज और हर के साथ भी. एग्जैक्टली यहाँ पर हिज आप लिखेंगे, यहाँ जो है ना वैसे होता है हिज और हर, इस तरह ब्रदर सिस्टर लिखे तो हिज हर भी हो गया। जी थैंक यू सर, थैंक यू. ओके चलिए जी इंशाल्लाह, सो विल कंटिन्यू द क्लास ऑन डे 14 एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिए सब, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।